हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉमन डिजीजेस दैट वी सी इन डेली लाइफ। लाइक आपका टाइफॉइड हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूमोनिया एंड आल्सो कॉमन कोल्ड। टुडे विल डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज विच इज़ मलेरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ टेक डाउन द नोट्स वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड द टॉपिक इन डिटेल्स। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं द कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज मलेरिया। तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, ये तो बहुत कॉमन है, मोस्ट ऑफ यू माइट नो दिस। द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम। तो इसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। So there are four basic species of plasmodium which causes malaria in human beings. Out of these two, the plasmodium falciparum and plasmodium vivax, these are very common causative agents in the Indian subcontinent. Indian subcontinent में आपको ये दोनों species ज़्यादा commonly मिल जाएंगे। Now, malignant malaria is caused by Plasmodium falciparum and can be fatal. तो ये एक बहुत क्रोनिक टाइप का मलेरिया होता है जिसको मैलिग्नेंट मलेरिया बोलता है। कभी कभी इसको हम लोग ब्रेन मलेरिया के नाम से भी जानते हैं, and that is caused by Plasmodium falciparum, and this can be fatal if not treated properly. Now, this is the parasite Plasmodium. As you can see, this is in the bloodstream of human beings. तो ये जो पिंक कलर के सेल्स आप लोग देख रहे हैं ये सारे आरबीसीज हैं, और ये है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम प्राइमरीली आरबीसी को ही इन्फेक्ट करता है इन द ब्लड। नाउ द ऑर्गन्स व्हिच आर इफेक्टेड इन दिस डिजीज, इट इज द लीवर एंड देन द आरबीसी। पहले लीवर इन्फेक्ट होता है, उसके बाद आरबीसी। मेजर इन्फेक्शन इज कैरिड आउट इन द आरबीसी इटसेल्फ। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दिस इज थ्रू वेक्टर, स्पेसिफिकली फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ना ये एक पॉइंट आप लोग नोट कर लो स्टूडेंट्स कि मोस्टली जो मॉस्किटो वेक्टर होते हैं जिससे डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है, मोस्टली दे आर फीमेल इंडिविजुअल्स, नॉट मेल इंडिविजुअल्स। रीजन इज, ये जो फीमेल इंडिविजुअल्स होते हैं ये लोग सैंग्विवोरस होते हैं। सैंग्विवोरस मींस दे फीड ऑन ब्लड। तो as a result, when they are sucking blood from one individual, during that time that they may carry this parasite like plasmodium, and they can transmit it to another human beings. So इसीलिए फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो में ही आप उसको ही एक वेक्टर की तरह कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। Now, what are the symptoms of malaria? This is a very common symptom that you will find: fever, high fever. At the same time, there will be chills. Shivering can also be there. मतलब body आपका shiver करने लगेगा। Fever will occur every alternate day, sometimes 24 hours, sometimes 48 hours. तो alternately आपको fever होगा, vomiting होगा, nausea होगा, headache होगा. So these are all the different symptoms of malaria. As you can see here, तो बॉडी के कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, जैसे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेक रहेगा इन द ब्रेन, देयर विल बी चिल्स एंड स्वेटिंग, ड्राई कॉफ, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लेन। इन द स्टोमक एरिया यू विल फाइंड नोसिया एंड वोमिटिंग कैन ऑकर, बैक पेन रहेगा, फैटिग एंड मसल पेन विल बी देयर, एंड सिस्टमैटिक फीवर। There will be fever at regular intervals. So these are the very common symptoms that you will see in case of malaria. Now let us move on to the life cycle of Plasmodium. देखो ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को होस्ट की तरह यूज करता है, द ह्यूमंस एंड द मॉस्किटो। तो इसीलिए इसको, इसका जो लाइफ साइकिल है उसको हम लोग डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। So the first point that you need to mention is malarial parasite is digenetic. It requires two hosts to complete its life cycle. One is the human and the other one is Anopheles mosquito. तो इसीलिए उसको डाइजेनेटिक बोला जाता है। डाई मीन्स टू, एज यू नो, तो उसको दो होस्ट चाहिए होते हैं, राइट। Now the life cycle of Plasmodium starts with the injecting of sporozoites through the bite of an infected female Anopheles mosquito. तो कोई इन्फेक्टेड या फिर कैरियर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो उसके सलाइवा के साथ some amount of sporozoites will come into a healthy individual's body, and then it will start a new cycle in the human body which is generally called as सीजोगोनी। ठीक है, आपके बुक में तो वर्ड मेंशन नहीं है, बट यस यू कैन पुट दिस डाउन, इट इज कॉल्ड एज सीजोगोनी। ठीक है, द लाइफ साइकिल दैट ऑकर्स इन द ह्यूमन बॉडी।
Now once this parasite enters into the human body, it will initially multiply within the liver cells. तो जैसे ही वो एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में, वो सीधे लीवर में चला जाता है. इट डज नॉट रिमेन इन ब्लड. इसका रीजन ये है कि अगर ये पैरासाइट ज्यादा देर तक ब्लड में रहा तो डब्ल्यूबीसीज उसके अगेंस्ट में एक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट कर देंगे. तो उनसे बचने के लिए, नॉट टू बी डिटेक्टेड बाय द डब्ल्यूबीसी, दिस पैरासाइट्स मूव इनटू द लीवर एंड देयर दे मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, लीवर में जो रिप्रोडक्शन होता है, वो जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से करते हैं. देन द आरबीसी विल बी अटैक्ड, मतलब लीवर सेल से जब वो मैच्योर होकर बाहर निकलेंगे. एक्चुअली अगर आप लोग देखोगे तो ये मलेरियल पैरासाइट लीवर सेल में 10 से 12 दिन तक रहता है, जब तक वो डिवाइड करता है और रेडी होता है इन्फेक्शन के लिए. और 10 से 12 दिन बाद वो लीवर से बाहर निकल जाएगा और वो ब्लड में आ जाएगा. नाउ वंस इट कम्स इन द ब्लड, देन इट विल स्टार्ट इन्फेक्टिंग दिस आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर. तो ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, वहां पे फिर अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करेगा और आरबीसी को रप्चर कर देगा. ठीक है, इट विल ब्रेक द आरबीसी. Now when it is breaking the RBC, actually what happens कि there is a toxic substance released during the rupture of RBC which is called as hemozoin. अब ये hemozoin जो chemical substance है, this is made from the degraded hemoglobin. तो जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय होता है. नाउ वी नो कि हीमोग्लोबिन हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज हीम, द आयरन पार्ट, एंड द ग्लोबिन व्हिच इज द प्रोटीन पार्ट. तो ये हीमोजोइन जो होता है वो हीम पार्ट से फॉर्मेशन होता है. When the RBC is ruptured, the hemoglobins also will be destroyed. It will release out the heme molecule. It will separate away the globin. Now this heme molecule will convert into a toxic substance called as the hemozoin. This causes the chill and fever. ये जो recurrent fever और chills होता है, that is specifically caused by this chemical substance called as hemozoin. Okay. Now, from the infected humans, the parasite enters into the body of the female Anopheles mosquito while sucking. तो जैसे ही ये आरबीसी को रप्चर करेंगे, आरबीसी रप्चर करके बाहर निकलेंगे, अभी ये सेल्स गैमेटोसाइट में डेवलप हो जाते हैं. दे डेवलप इनटू गैमेटोसाइट्स एंड दे सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द पेशेंट. पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में ये गैमेटोसाइटिक स्टेज में सर्कुलेट करते रहेंगे. जैसे ही कोई मॉस्किटो फिर से बाइट करेगा इस इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ये गैमेटोसाइट उसके बॉडी में चले जाएंगे थ्रू द ब्लड. द गैमेटोसाइट सर्कुलेटिंग इन द infected human being's body will enter into the mosquito body while it is sucking the blood. Okay, तो जब वो suck करेगा तो along with it will go into the stomach, the intestines, मतलब उसका जो digestive tract है. Now it carries out the next part of its life cycle there. So in the mosquito's gut, the gametocyte will fertilize, मतलब male gametocyte female gametocyte fuse कर जाएंगे, वो लोग fertilize करेंगे. They'll form a zygote. Now this formed zygote develops into thousands of sporozoites that migrate to the salivary gland. तो ये जो sporozoite form होते हैं, they are formed from the zygote itself. तो zygote क्या करेगा, वो rapidly divide करने लगा. It will start to divide rapidly, forming thousands of sporozoites. Now these sporozoites will migrate to the salivary gland and they will stay there. Now when this mosquito is biting another human being, then it will be transmitted to the healthy individual. That is, these are then transmitted to another healthy individual or another human being during a mosquito bite. तो जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा, ये स्पोरोजॉइट्स फिर से एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में चले जाएंगे और साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगा. ठीक है, द साइकिल विल अगेन कीप ऑन रिपीटिंग. सो दिस इज द टोटल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम. ना ये डायग्राम आपके बुक में भी दिया है. जैसे ही मॉस्किटो बाइट करता है, स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन बॉडी में आते हैं. नाउ दिस स्पोरोजॉइट्स विल एंटर इनटू द लीवर. इनसाइड द लीवर दे विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, दे विल रप्चर द लीवर सेल्स एंड दे विल कम आउट. तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. द टाइम पीरियड फ्रॉम व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स एंड द टाइम पीरियड फ्रॉम व्हेन द लीवर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड द पैरासाइट्स आर रिलीज्ड. ठीक है, तो इतने टाइम तक बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता, इसलिए इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है. दैट इज 10 to 12 days इन केस ऑफ मलेरियल पैरासाइट. तो लिवर सेल को रप्चर करके सारे निकल जाएंगे. ऑल दिस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स और सेल्स विल कम आउट. दे विल स्टार्ट टू इन्फेक्ट द आरबीसी. दे विल रप्चर द आरबीसी. They will come out in the form of gametocytes, that is a male gametocyte and the female gametocyte, and they will be circulating in the human body as the gametocyte. Now when a mosquito bites the human, it will take these gametocytes along with blood that will get into the mosquito.
Now once this mosquito inside the body of the mosquito in the intestine more specifically, the male and female gametocyte will fertilize, forming a zygote. This zygote will rapidly divide, forming sporozoites that migrate to the salivary gland, and they will remain in the salivary gland of the mosquito till it bites another human being. Now, once it bites another human being, the cycle continues. So, this is the life cycle of Plasmodium. Okay, students. Now, in the next class, we'll move on to some more of the common diseases. So this is a very important topic, as I told you. Please take down the life cycle of Plasmodium and the different aspects of the disease called as malaria. Okay? Thank you everyone.